So, good morning to all my dear friends. Welcome back to my channel Brainy Knowledge. And today in this video, we will discuss about the Governor Generals and Viceroys of India part. So, friends, in this video, we will discuss about the following Governor Generals: Lord Dufferin, Lord Curzon, Lord Minto-II, Hardinge-II, Lord Chelmsford, Lord Reading, Lord Irwin, Lord Willingdon, Lord Linlithgow, Lord Wavell, and Lord Mountbatten, and at last Chakravarti Rajagopalachari. So let's start with the Lord Dufferin. So friends, first we will discuss about Lord Dufferin from 1884 to 1888. Formation of Indian National Congress (INC) on 28 December 1885, 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई इन मुंबई by A.O. Hume. Passage of Bengal Tenancy Act, Awadh Tenancy Act and Punjab Tenancy Act. These three Tenancies Act was passed. Burma was made a province of India. बर्मा को इंडिया का प्रोविंस बना लिया गया with Rangoon as its capital in 1886. 1886 में बर्मा को इंडिया में मिलाया गया और उसकी कैपिटल को रंगून बना दिया गया. Wars fought were Third Anglo-Burma War in 1885. 1885 में Third Anglo-Burma War हुआ. So friends, next comes the Lord Curzon from 1899 to 1905. Appointment of Railway Commission under Thomas Robertson, appointment of Police Commission under Andrew Fraser and appointment of University Commission under Thomas Raleigh. अब तीन कमीशंस की अपॉइंटमेंट हुई. रेलवे कमीशन की बाय थॉमस रॉबर्टसन, पुलिस कमीशन बाय एंड्रयू फ्रेजर and University Commission by Thomas Day. Passage of Ancient Monuments Preservation Act in 1904. 1904 में Ancient Monuments Preservation Act पास हुआ and Establishment of Indian Archaeology Department. यहाँ अब Indian Archaeology Department की establishment हुई. Passage of Indian Universities Act, इंडियन फेमाइन ऑफ 1899 टू 1900. अब इंडियन में फेमाइन आया. पार्टीशन ऑफ बंगाल, मेन इवेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. Rebellion held was Munda rebellion led by Birsa Munda and movements was the only one Swadeshi movement from 1905 to 1911. So friends, next is Lord Minto-II from 1905 to 1910. Establishment of Muslim League in 1906. 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन हुई by आगा खान एंड सलीमुल्लाह. Split in Congress. कांग्रेस में फूट पड़ी in 1907 at सूरत सेशन. Appointment of first Indian member सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा in Viceroy's Executive Council. Establishment of TISCO. TISCO की फाउंडेशन हुई in 1907. Passage of Newspaper Act in 1908. 1908 में न्यूज़पेपर एक्ट पास हुआ एंड इंडियन प्रेस एक्ट in 1910. मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स in 1909. 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आई एंड लास्ट इज फाउंडेशन स्टोन ऑफ विक्टोरिया मेमोरियल वाज लेड. विक्टोरिया मेमोरियल के फाउंडेशन स्टोन रखी गई in 1906. So friends, now next comes the Lord Hardinge-II from 1910 to 1916. Transfer of capital from Calcutta to Delhi. कलकत्ता से दिल्ली कैपिटल आई in 1911. Beginning of World War I in 1914. 1914 में World War I फर्स्ट स्टार्ट हुआ. फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी फाउंड हुई 1916 में. फाउंडेशन ऑफ हिंदू महासभा बाय मदन मोहन मालवीय. हिंदू महासभा की फॉर्मेशन हुई. किसने की? मदन मोहन मालवीय ने. कब की? 1915 में. महात्मा गांधी केम बैक टू इंडिया. महात्मा गांधी इंडिया वापस आए इन 1915. क्रिएशन ऑफ मैकमोहन बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इंडिया और चाइना के बीच मैकमोहन लाइन बनी इन 1914. म्यूटिनी जो इसके टाइम में हुई वो द ओनली वन गदर म्यूटिनी.
So friends, next comes the Lord Chelmsford from 1916 to 1921. Foundation of Indian Home Rule Movement by Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant in 1916. 1916 में होम रूल लीग आई, फॉर्मेशन बाय बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट. Lucknow Pact between Indian National Congress and Muslim League in the same year 1916, appointment of Sadler Commission in 1917, foundation of Aligarh Muslim University in 1920. 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी. Montagu Chelmsford reforms in 1919, Rowlatt Act in 1919 and Passage of Government of India Act in 1919. Main situation of this Governor General was the Rowlatt Act in 1919 and Montagu Chelmsford reforms. Establishment of Imperial Bank of India in 1921. Now the movements that were held: Kheda Satyagraha of 1918, Jallianwala Bagh Massacre in 1919, Khilafat movement of 1919, Non-Cooperation movement of 1920 and Champaran Satyagraha of 1917. So now friends, next comes the Lord reading from 1921 to 1926. Foundation of Swaraj Party in 1920 and Foundation of Communist Party of India in 1925. Two parties were founded. First was Swaraj Party and second was Communist Party of India. Foundation of Rashtriya Swayam Sevak Sangh by K.V. Hedgewar in 1925. Foundation of Vishwa Bharati University by Rabindranath Tagore in 1921. 1921 में विश्व भारती यूनिवर्सिटी फाउंडेशन by Rabindranath Tagore. Railway budget was separated from general budget. At this time, railway budget was separated from general budget since 1924 and continued till 2016. Movements held were Malabar Rebellion in 1921, Chori Chora incident in 1922 and Kakori train robbery in 1925. So friends, now comes the Lord Irwin from 1926 to 1931. Simon Commission appointment and Nehru report in 1928. 1928 में साइमन कमीशन आया and नेहरू रिपोर्ट. Declaration of पूर्ण स्वराज in 1929. First round table conference in 1930. 1930 में first round table conference हुई. Launching of civil disobedience movement with Salt March in 1930. Important event was the launching of civil disobedience movement. Gandhi-Irwin Pact in 1931. Bombing in Central Legislative Assembly by Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt in 1929. And the last was execution of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev in 1931. 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का एग्जीक्यूशन हुआ. So friends, now next comes the Lord Willingdon from 1931 to 1936. Second round table conference in 1931. 1931 में second round table conference हुई. पूना पैक्ट बिटवीन महात्मा गांधी एंड भीमराव अंबेडकर. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन 1932. 1932 में थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की एस्टेब्लिशमेंट इन 1934 इन लॉर्ड विलिंगडन्स टाइम. पैसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा इन 1936 एंड फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी in 1934. 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की फाउंडेशन हुई. 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया और 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्मेशन. Now next comes the Lord Linlithgow from 1936 to 1943.
Indian provincial election in 1937. First main and important event was the Indian provincial election held in 1937. Indian entry into World War II in 1939. फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई इन 1939. लाहौर रिजोल्यूशन एंड अगस्त ऑफर, टू मेन इवेंट्स, लाहौर रिजोल्यूशन एंड अगस्त ऑफर इन 1940. क्रिप्स मिशन इन 1942 as well as quit India movement in 1942. फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी इन 1942. 1942 में ही इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना हुई. अगस्त ऑफर ऑन 8 मार्च 1942. So friends, next comes the Lord Wavell from 1944 to 1947. CR formula in 1944. 1944 में CR formula proposed by Chakravarti Rajgopalachari to solve the political deadlock between Muslim League and Indian National Congress. ये मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच फूट को सोल्व करने के लिए सीआर फॉर्मूला आया. शिमला कॉन्फ्रेंस इन 1945, कैबिनेट मिशन इन 1946, celebration of direct action day on 16 August 1946. Interim government was formed. Main event was that interim government was formed in Wavell's time. Royal Indian Navy mutiny in 1940. So friends, now next comes the Lord Mountbatten from 1947 to 1948. पैसेज ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947. 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ. अपॉइंटमेंट ऑफ रेडक्लिफ कमीशन. रेडक्लिफ कमीशन अपॉइंट हुआ अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सिरिल रेडक्लिफ. क्यों हुआ? टू डेमार्केट द बॉर्डर लाइन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी एंड पंजाब प्रोविंस. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया. So friends, next and last comes the Chakravarti Rajgopalachari. Last Governor General of India. He was the last appointed Governor General of India. First and only Indian born Governor General of India. He was the only one who was from India and appointed as Governor General. So friends, I hope you like my video. Please like, share and subscribe my channel.